You are not behaving as an advocate. You are behaving as a dictator, and you want to dictate the Because terms my of the lord court. is not Yes, listening Mr. to me. Mr. My Mr. lord. That's Rupra. my problem. Mr. Rupra, listen, we can't compromise with the dignity of the chair. Keep in mind. नहीं, आप मेरे को सुन नहीं रहे थे तो मैं बोलूं ना। सुनने के बाद बोला नहीं, आप मेरे को, मैं वाक्य बोलना चालू करता, आप बीच में टोक रहे हो। आपको अगर वकालत करना मुश्किल हो जाएगा। आवाज ऊंची ऊंची करके आप सोचते हैं कोर्ट को दबा लेंगे। Forget about that. But my lord is the judge. My lord will have to hear me. आप सुनते नहीं थे। आप बोलते रहिए जो बोलते। Pressures which आप मेरी बात सुनिए ना। आप बताइए। I am here now. I have got more knowledge of the helm of affairs। आप मेरी बात नहीं सुनते। Problem क्या है आपके? Mr. Rupra, listen. नहीं, आप your lordship never permit me to make my submission. This is not proper on your part. Your lordship should know. Order. My lord, your lordship must know that your lordship is sitting there and you listen to my humble submission. अरे मेरी बात आपने देखे, उस दिन आपने ऑर्डर शीट, मेरी बात सुनिए, आप मेरे को बोलने नहीं देते। देखिए, सुपीरियर विजडम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पेन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, प्रिजम्पशन। नहीं, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। उस दिन भी आपने बोलने नहीं दिया। मैं एक शब्द बोलता हूं तो आप मेरे को रोकते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। मैंने बोला है नॉट रिसीव्ड। मैंने, आपने जो ऑर्डर शीट में जो एक डॉक्यूमेंट रेफर किया है, आई एम सरप्राइज टू सी दैट डॉक्यूमेंट योर लॉर्डशिप ऑर्डर्ड देम टू गिव टू मी। दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट सप्लाइड। Annexure P3 is totally false, fabricated document. It does not contain the signature. My lord, please permit me. Problem ये आप मेरे को बोलने नहीं देते। देखिए, आपका अधिकार है जजमेंट देने का, मेरा निवेदन है मेरे को सुनने का। आप मेरी बात नहीं सुनते। उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनी। My client is so terrorized that even though he has not taken one single bottle, he has compromised the matter. But in spite of that, my lord wants to. आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। पहली बताइए, इस हाई कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरा निवेदन तो सुनिए। मेरा नहीं, आप मेरी बातें नहीं सुनते। देखिए, आपका अधिकार इतना ही है कि आप जजमेंट दें, परंतु निवेदन तो मेरे करने का अधिकार है। That is what I am doing। देखिए, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, आपने जो ऑर्डर शीट लिखी, आप मेरी बात सुनिए पहले, फिर आप जो ऑर्डर करेंगे सिर मत्थे है। आप बोलोगे इनको इतना पैसा दो, ये दो। इट इज ऑल, वी आर, योर लॉर्डशिप इज करेक्ट एंड वी आर रॉन्ग, बट सबमिशन तो बोलने दीजिए। आप सबमिशन ही करने देते। देखिए, एक डॉक्यूमेंट एनेक्सचर P3 है, उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड में नहीं है, उसके आधार पे आप मेरे को बोले पैसा दीजिए। एंड माय लॉर्ड, देयर इज सो मच प्रेशर ऑन मी दैट आई वाज कंपेल्ड टू पे दिस मनी। प्लीज अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। आई एम नॉट अ रॉन्ग मैन, बट आई एम इन दिस बिजनेस। I have to subject myself to the pressures of the excise department. Whatever they say, I have to do. All those documents which my lord relied upon and mentioned in the order sheet, copies of them are not supplied to me. Lord, Annexure P3 is totally false and fabricated document. If my lord wants to contest, then my lord, I will say, produce the original Annexure P3. Then I will examine each and everything. Same place, my lord, at 8 a.m. a person has signed at one place, same person has signed at another place 8 kilometers ago. My lord, there is so much of chaos in this Annexure P3. It is not a signed document. When I am saying original is not there, my lord is relying upon this Annexure P3, and lord, your lordship said, and lord, there was pressure on me. So therefore, I have compromised the matter, and your lordship, please see, there is no need to go into the academic exercise. The exercise is required not only if there is a dispute. When the petitioners and respondent number 5 have compromised the matter, there's no need to go into the academic exercise. But in case my lord is interested in the academic exercise, I am lord free. I will withdraw this compromise application and I will immediately say, first, you produce the original Annexure P3. I want to see it with my own eyes. I want my client to see. I want to cross-examine each and every witness of theirs. Your lordship, please see that these people are not, they can't answer my cross-examination. Annexure P3 is full of mistakes, No pehli baat to original is not there. My lord, my right is firstly to see the original Annexure P3. My right is to cross-examine all those persons. Your lordship, this is not a civil trial. This is not a civil court. But my lord has been kind enough to proceed to get into the trial. I'm also not open. I have been practicing in civil court also. I will cross-examine those witnesses. But first, my lord, please order them to produce the original Annexure P3. Let us not waste the valuable time of this honorable court in delving upon this document, which is a photocopy. It's a fabricated document. And it does not have the signature. Please order them to produce, my lord. My one request is, Annexure P3 ka original must be produced before the court.
Secondly, my lord, I must get a right to cross-examine all these witnesses, my lord. Their statement must be recorded verbatim, just like a civil court. I am open to trial if my lord is wanting to have the trial. Absolutely no problem. But at the cost of repetition, I am humbly submitting that the petitioner and respondent number 5 have compromised the matter. There is no need to tread upon that academics exercise, my lord. Just okay, that's all. Yes. Okay. Then you will not speak even a single word. Let me pass the order. Right? My humble submission. More than that, we don't want to. My lord, I have, Because listen, if you really want to create further problem, that is up to you. We are ready to face that. Lord, I have paid the maximum price So for that's- making my submission. Now Whatever please we have permit paid. me to make my We submission. have already. Lord, there are 3 applications which I want to make. No problem. You file in the registry. And So my lord will this- be this kind is- enough to permit. Mr. Rupra, you just Lord, file. it is my humble request that, Lord, a very Rupra, serious punishment we has been don't given want to the Mr. council. Rupra, we don't Lord, want I have to submit my cases, Lord. And Lord, when my Lord is not permitting me to make my submission, so I have to, Lord, sometimes, but Ajay, this your does not officer- mean, just a your officer- very stringent punishment has been given to Mr. me. Rupra, listen. As an advocate, Listen, Lord, listen. it is. No, you are not behaving as an advocate. You are behaving as a dictator and you want to dictate the Because terms my of the Lord court. is not Yes, listening Mr. to me, Mr. my Mr. Lord. That's Rupra. my problem. No, your seniorship has to be reconsidered by the High Court. My Lord, it is my humble Very good. request. There Now, are Mr. 3 applications. Now And you continue to raise voice like you raise. Everything is recorded, Mr. Rupra. This is a live streaming. It is not that we are. my Lord's discussing in the refusal chamber. to hear me is also recorded. Mr. Rupra, listen. We can't compromise with the dignity of the chair. Keep in mind. But my By Lord, raising please voice like understand. you. But please You understand, did Lord, not that my Lord will have to deserve hear be a me. senior advocate. आप मेरे If I say को, so. why my Lord is not listening to me? My Lord, only thing is that my humble Rupra, prayer was Mr. Rupra, why I raised the voice. But I'm human being, Lord. I'm human being. You- Because maybe I not- know that my client is correct, Lord, but in spite of that, under pressure, Lord, he has done all that. Pressure? Who Yes. put the pressure? We have not put it any pressure. We have not passed such an order. Excise department. Mr. Rupra, listen, don't use such type of word. We did not say it. Still, Lord, we I say humbly we request. wanted to establish whether That this senior law- designation snatching may kindly be not No, done, sorry. Lord. That's a very stringent punishment my Lord has It given. is not punishment. Mr. Rupra, we have to consider. Then these Certainly. 3 applications kindly permit me to file. The other applications. My Lord, my humble request is kindly give me Mr. some Rupra, time. take Kindly first- give me take some first time. order passed by this court, please. You will not appear in this court. My Lord, The order. Listen, Mr. Rupra, if you are aggrieved, you can challenge wherever you want. no. That's all. I will make a request to my Lord. I'll not. Mr. Rupra, this is not the way. तुमने तो सिर पे चढ़ा लिया अपना आसमान पूरा. It is my humble request. कि इससे ऐसे Lord, I have to make my submission. आप- you Please have to do not direct- divest me of the in seniority. this नहीं That is a very stringent punishment, नहीं, Lord, my Lord has इसमें given. क्या? फिर इसमें आपने क्या फॉर गारंटी ले लिया कोर्ट को अगर आपने सीरियस नहीं, आप मेरे को सुन नहीं रहे थे तो मैं बोलूं ना. अच्छा, आप प्लीज आपने बोलने के बाद think order from pass my किया। viewpoint, Lord. बोलने के बाद ऑर्डर पास किया, ठीक है ना? अभी भी तो आवाज की आपकी ठीक है, अब कैसे ठीक होगी? तब तो आप चिल्ला रहे थे अपना जैसे छत फाड़ देंगे इसको. आपने इतना स्ट्रिंजेंट ऑर्डर कर दिया. मेरा मुकदमे तो हम रोज आए दिन करते हैं. कोई बात नहीं, जो करना था ऑर्डर कर दिया. दैट्स ऑल. अच्छा सुनो, बाकी कौन है इसको? ये मेरी तमाम एप्लीकेशन. दे दिए ना, हमने बोल दिया रख लो इसके अभी. दैट्स ऑल. वो दूसरे कौन है आपका ऑफिसर कौन है? अच्छा, एक और मेरा निवेदन सुन लीजिए. आज जो आपका परसों का ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ था, कोई बात नहीं. इसलिए आपने आप मिस्टर रूपरा, यू आर प्रेजेंट इन कोर्ट. आप ठीक नहीं एक सेकंड, आपकी प्रेजेंस में हुआ? मेरी प्रेजेंस में आपने ऑर्डर नहीं, परंतु तो- मैंने जब उसका वीडियो सुना तो मेरे को रिस्पॉन्ड नंबर 5 की पर्सनल प्रेजेंस नहीं सुनी. इसमें प्लीज अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम. आपकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, आपको बिल्कुल सुना है और आप ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम. सर, मेरा आपसे पुनः रिक्वेस्ट है आप कि देखिए, ये दिस इज समथिंग बिटवीन द पिटिशनर एंड रिस्पॉन्ड नंबर 5. व्हाई द काउंसिल शुड पे सच अ हेवी बिकॉज काउंसिल क्रिएटेड रक्स इन द कोर्ट. My lord, That's why your lordship also you are refused not, to hear me. Mr. Rupra, आपकी भी तो गलती है ना. आप you have not behaved like a officer of the court. नहीं, पर आप मेरे को सुन नहीं रहे थे. आपकी तो सुनने का रहता है ना. हमने सुना है ना, सुनने के बाद बोला. नहीं, आप मेरे को, मैं वाक्य बोलना चालू करता, आप बीच में टोक रहे हो. आप सुनो, हम टोक नहीं रहे, बल्कि आपकी आदत ये है कि आप ना इंटरजेक्ट करते हैं बार बार. और मैंने एक बार नहीं, कितनी बार आपको कहा कि डोंट इंटरजेक्ट लाइक दिस. आप तो अपना रनिंग कमेंट्री लगे रहते हैं. एंड यू आर दी ओनली पर्सन इन दिस बार
जो इंटरजेक्ट की अदरवाइज यहाँ कोई आदत नहीं है, एक सुनता दूसरा आराम से खड़ा होता, पर आप कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं बीच में। वो इसलिए आप क्योंकि प्रॉपर्ली मिस्टर दिवाकर को आपको तो अच्छे से सुन रहे थे, मेरे को नहीं सुन रहे थे सर। बस कोई होगा तो फिर ठीक है, बट डोंट अपीयर बिफोर दिस कोर्ट। आपको अगर है कोई करना मुश्किल हो जाएगा तो होने दो। अपने पक्षकार की पैरवी ना करें। आपकी पक्षकार की पैरवी करो, दूसरी कोर्ट पढ़िए। हमारे पास आपका कोई मैटर होगा तो विल ट्रांसफर दिस मैटर, वी विल नॉट हियर। नहीं, परंतु मेरे को सीनियर डेजिग्नेशन से आपने जो हटाया, दैट इज वेरी स्ट्रिंजेंट सर। हमने नहीं हटाया, इतना बड़ा दोष नहीं है मेरा। अभी सुन लो, फिर मिस्टर उपरा फिर आप क्रिएट कर रहे हैं। हमने नहीं हटाया, हमने फुल कोर्ट को रेफर किया कि दोबारा इसका कंसिडर करें वेदर इज अ फिट और नॉट। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग, बल्कि इस पे वो इसकी नोट कर लेना, ये रिकॉर्डिंग ले लेना आज की लाइव स्ट्रीमिंग, एंड दिस विल बी पोस्टेड बिफोर द फुल कोर्ट। हम वहां पे स्क्रीनिंग भी दिखाएंगे। अच्छा, आप बाकी बताइए, कौन आया आपके ऑफिसर, कौन आया? When will the case be listed next, Lord? क्या मेरे को 15 दिन का समय देंगे आप? आप तो अपेयर नहीं होंगे। आप नहीं अपेयर होंगे, वो अपना कोई एंगेज करेगा, कोई कौंसल। आप नहीं होंगे। तो कौन सी तारीख दे रही है? तो डे आफ्टर टुमारो, 9 ठीक। आप वो जो भी आप इनको कुछ समय तो दे दें। नहीं, समय क्या देना है? हमने सिर्फ ये जो मना कर रहे थे आप, उनके बिहाफ पे आप पूछेंगे कि आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी या आपने बिना इंस्ट्रक्शन कोर्ट में सबमिट किया कि नहीं, कुछ नहीं रिसीव किया। और इफ नॉट रिसीव्ड व्हाई 25 लाख पेड, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। क्योंकि यू हैव वेस्टेड 2 dates एंड रेज द वॉइस के नहीं, कुछ नहीं मिला, सब कुछ हुआ है, ये मेंटेनेबल नहीं। हमने भी कहा मेंटेनेबल नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। बट सर, अपने पक्षकार की पैरवी करते करते मेनी टाइम्स द एडवोकेट ट्रांसग्रेस दिस इज नॉट द मिलॉर्ड, दिस इज टू मच मिलॉर्ड। कैसे वकालत करेंगे? मिस्टर लिसन रूपरा, यू आर फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, देन यू अपीयर फॉर द क्लाइंट। बट माय लॉर्ड इज द जज, माय लॉर्ड विल हैव टू हियर मी। आप सुनते नहीं थे। आप बोलते रहिए जो बोलना, ये भी हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। इस तरह कोर्ट नहीं चल सकती मिस्टर रूपरा, जिस तरह से आप सोचते हैं कि इस तरह चले। और ये ऐसे आवाज ऊंची ऊंची करके आप सोचते हैं कोर्ट को दबा लेंगे। फॉरगेट अबाउट दैट। मैं एक वाक्य बोलता, आप बीच में बोल देते सर। तो बोलना है, कोर्ट तो बोलेगी, 100 बार बोलेगी, क्वेश्चन पूछेगी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि P3 का मेरे को ओरिजिनल चाहिए, उसमें कौन सी गलत बात है सर? अभी उससे पहले क्या बोला? ओरिजिनल चाहिए। कौन सी डेट में बोला आपने ओरिजिनल चाहिए? आज बोला फर्स्ट टाइम। आप उससे पहले मुझे एक डेट में बता दीजिए। सब लाइव स्ट्रीमिंग हर डेट की अगर आपको चाहिए तो। मेरा निवेदन जो है, आपका निवेदन तो आप इस तरह का करें कि मैंने कितनी बार कहा, एक लाइव स्ट्रीम में एक बार दिखा दो। आपने कुछ डॉक्यूमेंट मांगा, मुझे दिखाओ, कुछ नहीं मांगा। आज आपने ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम कहते हैं कि वो आया आगे बताता कि जी मैंने कुछ नहीं मिला, स्टेटमेंट देता, हम रिकॉर्ड करते। सर, मैंने अपने जवाबदार में रिटर्न दिया, आपने उस डॉक्यूमेंट को रेफर किया जो डॉक्यूमेंट आज तक मेरे को नहीं मिला। गलत किया तो आप इसको चैलेंज करो, ऑर्डर को। आपको समय नहीं दे रहे, आप एक दिन की तारीख दे रहे हैं, हम कहाँ से? आप फिर एक दिन की, परसों की तारीख दे रहे हैं, हम अपनी उसे दे रहे हैं। और दूसरा ये, why he has not appeared in this court despite the order and you are very much present। मेरा कहना, थोड़ा समय दीजिए। इफ योर लॉर्डशिप वांट्स दैट, समय हो गया, परसों आएगा वो देखेंगे। दैट्स ऑल। हाँ, आपके ऑफिसर कौन आया जो पंचनामा पे सिग्नेचर से? ये तीनों से पंचनामा पे on 28 March 2025 at request of Lord Courts of Pradesh number 5, matter was directed to be posted on 4/4/2025 and directed the responsible person on behalf of the respondent number 5 shall also be present in court. Stop. It was further directed that respondent number 1 to 4 shall also take instruction as to how much stock was handed over to respondent number 5 as to the stock which belongs to the petitioner herein. Stop. On 4/4/2025, manager Sri Puneet Chaurasia, manager of respondent number 5, was present in person, and he stated that while preparing 6 panchanamas dated 31st March 2024/1/4/24, while handing over remainder material, he was not present on that day, and he
did not know as to how much remainder material was handed over. Stop. Again, he submitted that he was very much there. However, no stock has been handed over by the petitioner to the respondent number 5. Stop. Para. It is not in dispute that his presence or signatures are not mentioned in 6 Panchanamas dated 31st March 2024. Stop. Para. Counsel for the respondent number 5 submitted that the said respondent received empty soap and there was no stock available therein and no stock has been received from the petitioner by the respondent number 5. Stop. Accordingly, the respondent state was directed to find out and produce all the signatories who have appended their signatures on Panchanama dated 31st March 2024 on the negative hearing, and it was made clear that they shall be required to answer the questions of the court of the negative hearing along with the office of the respondent state who are present and handed over the stock in favor of respondent number 5 after taking it from the petitioner herein. Stop. It was made clear that if they are reluctant to be present before this court, then the state authority can take the assistance of the police to ensure their presence on the next set of hearing, including respondent number 5 personally. Stop. Moreover, wide letter dated 8 May 2024, the Office of Assistant Excise Commissioner, District Jabalpur, sent a communication to respondent number 5 to deposit a deficit excise duty of the questioned stock, and pursuant thereto, the respondent number 5 had deposited an amount of rupees 6.50 lakh via 3 different e-challans. Stop. This court frame a question that as to whether the remainder of stock was handed over in favor of respondent number 5 as brought on record as mentioned above. Stop. Counsel for respondent number 5 on instruction denied the fact that and stated that no stock was received by the said respondent. Stop. If that is the position, the respondent state has made the Panchanama of handing over, then this court wants to know where this huge stock of thousands of liters of liquor has gone, whether given to respondent number 5 or misappropriated by the officers of the state who were present on that very night, which is not a simpliciter conjectural dispute. Stop. Para. Today, despite the direction passed by this court, respondent number 5 is not present.